Hello students, welcome back to my channel Commerce Tube, your flight to success. And yes students, today we are going to discuss about recent initiatives in entrepreneurship development. Under that, Startup India, obviously, chapter number 3, 12th OCM. Okay? So without delaying much children, let's get started. Students, entrepreneurship is picking up in India, definitely. Following are a few initiatives in entrepreneurship development. Now these are the initiatives which have been taken by the government children, so that it gives a kick start for the entrepreneurship. So the first one which we are going to discuss is Startup India. Let us first understand the meaning of Startup India first of all. पहले तो ये जानते हैं कि a startup is defined as an entity having its headquarter in India, definitely. Which was opened less than 10 years ago and has an annual turnover of less than 100 crores. तो इस दो स्टेटमेंट के ऊपर हम एनालाइज कर सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द स्टार्टअप एंड व्हाट इम्पोर्टेंट स्टेप द गवर्नमेंट हैज टेकन, सो हाउ मच दे हैव एनुअल टर्नओवर जो है वो समझाता है, हमको एक इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव दर्शाता है. ठीक है. So under this initiative, the government has already launched the iMade program, children, to help Indian entrepreneurs to build 10 lakh mobile app startups. So look at the demand or look at the importance given to the Indian entrepreneurs जो 10 लाख mobile app startups के और जा रहे हैं. So they have launched this iMade program. ठीक है. The Mudra Bank scheme, that is Pradhan Mantri Mudra Yojana, PMMY. Children, kindly note this down. Underline भी आप कर सकते हो. Remember it, write in the notebook so that whenever you revise, you come to know the full form of PMMY. That is Pradhan Mantri Mudra Yojana. So what is it? Is an initiative by Indian government which aims to provide microfinance. Definitely. इंडियन गवर्नमेंट जो है माइक्रो फाइनेंस देती है. ओके, माइक्रो फाइनेंस देती है विथ लो इंटरेस्ट रेट्स लोन्स टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स. डेफिनेटली ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो coming from a very low socio-economic background who are not able to pay high interest rates. So the government is giving them such kind of micro finance. ठीक है. The objective, I mean to say one of the objectives of Indian government is to make India a nation of job creators instead of job seekers. Definitely now the time has come, children, कि हम job creators बने, ना कि job seekers. And we have so many cases around us where we see that unemployment is one of the major problems in the economic situation, isn't it? The growth of the country is affected by certain factors, or unemployment is one of the factors, you can say. So the government ने ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया है कि उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो हमारे नेशन को जॉब क्रिएटर करे, ना कि जॉब सीकर. ओके. Thus the government wants to encourage entrepreneurship and promote innovation. Definitely वो entrepreneurship को encourage करना चाहते हैं कि ज़्यादा लोग, more and more people join it, try to see their passion and get involved in entrepreneurship. और जो भी नया कुछ, some innovation, some creativity, those who have some talent they themselves don't know, तो उन चीज़ों को वो promote करने के लिए ये सारे schemes लाती है. ठीक है. It aims at creating such an ecosystem which will be conducive for the growth of startups in India. Definitely वो एक अच्छा ecosystem बनाना चाहती है जो बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी हमारे ग्रोथ के लिए, कंट्री के स्टार्टअप्स के लिए इन आवर ओन कंट्री, इजंट इट? सो जब हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, जब हम खुद एंटरप्रेन्योर बनेंगे, जब हम खुद स्टार्ट करेंगे, सो हमारा एक खुद का ही इकोसिस्टम होगा, नॉर वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. सो वी विल बी सेल्फ डिपेंडेंट, है ना? सो इट विल बी अ वेरी गुड ग्रोथ फॉर द स्टार्टअप्स इन इंडिया. एंड ऑन दिस पॉइंट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी कि अगर हम आज का जो देखते हैं, जहाँ पर the government, श्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमें कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हो, बी वोकल फॉर लोकल. सो दिस इज व्हाट, दिस इज
to give a kick start to the startups and people should start producing the own goods in our own country. So हमारा खुद का एक इकोसिस्टम हो जाएगा, ना कि हमको दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं हो. ठीक है. सो स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो यहाँ पर हम स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात करेंगे. इट वॉज लॉन्च्ड इन 2016, so you can say 4 years back, or total 4 years हो चुके हैं in 2020. It aims at building an ecosystem which will nurture startups in the country. Definitely जो nurture कर सके startups को, जो encourage कर सके, motivate कर सके, whatever is the need they can fulfill it. That's why the government has taken this initiative, so that sustainable economic growth and large scale employment opportunities can be generated. जो भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सस्टेन रहे और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो. सो इसके वजह से ये पूरा दे हैव टेकन दिस इनिशिएटिव ऑफ स्टार्टअप्स. Thus the government of India has announced Startup India action plan that focuses on the following areas. So there is an action plan also. Let's see what does it include, children. First one is simplification and hand holding. Here compliance procedures for startups will be made easy. Obviously compliance agree to follow the rules and regulations, वो बहुत ही easy किया जाएगा. If necessary winding up will also allowed on fast track basis. अगर उनको wind up भी करना है तो वो भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा. So that means basically जो भी rules to be followed है, regulations to be followed है, बहुत वो startups के लिए जो procedure involved होती है वो बहुत ही easy किया जाएगा. So that people will be easily going into startups and getting succeeded. दूसरा जो एरिया है जहाँ पर ये स्टार्टअप एक्शन प्लान फोकस करता है वो है फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स. गवर्नमेंट विल पार्टिसिपेट इन फंडिंग प्रोसेस इनडायरेक्टली एज वेल एज टैक्स एग्जाम्पशंस विल बी अलाउड इन कैपिटल गेन इनकम. डेफिनेटली गवर्नमेंट फंडिंग प्रोसेस इनडायरेक्टली करेगी, टैक्स में एग्जाम्पशंस मिलेंगे, आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा in case of income tax, capital gain, whatsoever. So I think that is one of the important step by the government of India, isn't it? जहाँ पर अगर ये कंसेशन मिलता है तो हमको encouragement मिलता है, अपकमिंग entrepreneurs को encouragement मिलता है कि वो स्टार्टअप कर सके. So I think this is a fabulous plan. Third area है industry, academia, partnership and incubation. Under this initiative, government is proposing to introduce startup fest. जैसे कि एक सेमिनार आप पकड़ के चलो, एक एग्जीबिशन पकड़ के चलो, या एक फेस्ट पकड़ के चलो जहाँ पे सारे स्टार्टअप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा और ट्रेनिंग मिलेंगी. टू प्रोवाइड प्री इंक्यूबेशन ट्रेनिंग, मतलब फ्रॉम द बेसिक्स, जैसे फ्रॉम द ग्राउंड रूट यू कैन से, उन जैसी ट्रेनिंग मिलेंगी. और टू सेट अप इंक्यूबेटर्स विद हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर. So you're giving them in-hand experience about how actually they start up with the help of private sector, set up those incubators. So they'll come and they will see, they will understand, they will try, they will get training, and definitely they will succeed. Some still to launch innovation focused programs. Definitely ये जो सारे seminars होते हैं, workshops होता है, training होता है, fest होता है, focus programs होता है, वो बहुत important role play करता है students in the success of any entrepreneurs, right? Especially we are talking about the upcoming generation, the people who are not aware, they need to be given the training, incubation, जो pre incubation वाले ट्रेनिंग होते हैं वो नेसेसरी होती है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, उनके पैशन को पहचानने के लिए, उनका इंटरेस्ट उनको समझाने के लिए. सो दिस इज फैब्युलस, सो दैट they are able to understand the industry properly, able to understand their capability, being an entrepreneur, what they can go ahead. So definitely these areas will help them, in understanding the situation. Now बहुत जल्दी से हम objectives of startups भी जानेंगे. What are the objectives of entrepreneurship development programs under startups and stand-ups in India? First is 10,000 crore startup funding pool. My God, it's great, है ना. सेकेंड, रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस. आपका जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस जो हमेशा हाई होता था वो अब रिड्यूस कर देंगे. ग्रेट. इम्प्रूव्ड बैंक्रप्सी कोड टू एंश्योर अ 90-day एग्जिट विंडो. इट्स फ्रॉम बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू उनको एक इम्प्रूव्ड बैंक्रप्सी कोड दिया जाता है जहाँ पर उनको 90-day एग्जिट विंडो भी मिलता है. ठीक है. फ्रीडम फ्रॉम मिस्टिफाइंग इंस्पेक्शन फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन. बहुत सारे जो
प्रॉब्लमेटिक इंस्पेक्शन होते हैं, अननेसेसरी इंस्पेक्शन होते हैं, वो पहले 3 सालों के लिए दे आर इरेडिकेटेड, दे आर फ्री फ्रॉम दैट. Free from capital gain tax for first 3 years of operation. Great. Again, an advantage, नहीं tax pay करना है on the capital gains. Freedom from tax for first 3 years of operation. No need of paying tax for the first 3 years. Great. Self glorification compliance. Self जो भी वो लोग set करते हैं, जो भी rules and regulation होते हैं, वो self glorify के लिए वो खुद follow करते हैं. So you have to follow your own set of rules and regulations, and you should comply with that, because it has made very easy now. Target 5 lakh schools and involve 10 lakh children in innovation related program. Good, because all the schools are taken, 5 lakh schools is maximum number of schools, and 10 lakh children in such programs. It's a good future to the country. Encourage entrepreneurship within the country, definitely. जैसे मैंने कहा, be vocal for local, आत्मनिर्भर भारत हो, जैसे यहाँ स्टार्टअप हो तो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश में ही रहेंगे, एंड दे विल डू वंडर्स. प्रमोट इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एज अ स्टार्टअप हब. Yes, you have to make the country global, so every entire world comes to know about the Indian startups. It will become a startup hub. Last but not the least, build startup oasis as Rajasthan Incubation Center. Now here they are talking about some startup. Okay, so Oasis as Rajasthan Incubation Center is the name given to it. So these are the main following objectives of this program under Startups Children. So I hope you understood. Actually, this is really very important for your knowledge also. So if this topic or if this question is asked about startups in India, then definitely I think you can write whatever has been explained and some of the objectives also. Yes, you have थोड़े से technical terms हैं, लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे. Being it is related to our own country and the recent information which they have added in the new syllabus, then I think you should have this knowledge, children. Read it once, twice, thrice. As you will read more number of times, definitely you will remember it also. It's just you have to remember some important points as far as objectives are concerned. Other topics you can just explain however we have discussed. So I hope students that this topic, that is Startup India, is a very interesting topic, और आपने बहुत अच्छे से जाना कि स्टार्टअप का क्या महत्व है. Even if you think that you want to start something, then this information is helpful for you also. So you can browse on the net also about the details about all this, because this is just 4 years from now they have started, and now there are so many things which have come under the government rules regarding registering for the startups, and everything had come in between. So it's fabulous those who want to go for certain startups. ठीक है. And nowadays I think as small children after 6th standard you can learn coding, so people are able to start their own apps also. Now you can see how the country is developing, है ना, how the education system will play a role also. So on that good note, children, I hope the concept is clear. If so, kindly like, subscribe and share. I'll meet you in the next video, children, very soon. Thank you so much. Thank you.